Earlier, what people used to do was they tried to double their money. It may take 10 years or 20 years, it doesn't matter. Mostly, people used to do was they used to grow their money at 6 to 7% per year, and that's it. Life is all set. But growing your money through the most common available options is not sufficient anymore because inflation is eating your money and it's eating at a rate higher than ever. In 2024, everywhere you will find news like inflation hit all-time high, inflation worsens in the country, and many more. And you are losing your money in this process. Then a common question comes in. सिर्फ मेरा ही पैसा थोड़ी ना घट रहा है, सबका ही तो घट रहा है ना? Yes, सबका घट रहा है. But you worked for your own money. You worked hard for your own money. No one else did it for you. So you need to take steps to protect your capital. No one else will do it for you. I know a lot of people जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनका पैसा घट रहा है या बढ़ रहा है, वैल्यू वाइज, क्वांटिटी वाइज बढ़ रहा है, और इसमें वो लोग बहुत खुश हैं. एंड ट्रस्ट मी, आज जो भी तुम लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद कभी यह लाइफस्टाइल भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे. बिकॉज इन्फ्लेशन इज एट 9 to 11%. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लेशन व्हिच यू सी इन द न्यूज चैनल्स एंड एवरीथिंग. द एक्चुअल इन्फ्लेशन इज मच मोर देन दैट. एफडी कर ले, सिक्योरिटी है उसमें. आरडी कर ले, उसमें भी सिक्योरिटी है. और एक पीपीएफ भी कर लेना, उसमें भी सिक्योरिटी है. नाउ डू यू थिंक दिस काइंड ऑफ सिक्योरिटीज विल रियली सिक्योर योर फ्यूचर? Let's break down how secured your future is. Before that, please don't close this video misunderstanding it as another FD bashing video. It's not. You get 6 to 7% interest rate in FD. And CPI inflation right now is more than 9%. That means every year your money is increasing by 7% in FD and then it's decreasing by 9% due to inflation, which means your effective return is minus 2% every year. And if we apply the rule of 72 here, then your money will be halved within a span of 8 years. That means after 10 years of investing in FD, you are getting an amount which is half the amount of money, which is less than half the amount of money which you have invested in the FD initially. And no doubt quantity wise you are doubling it, like 2 लाख का 4 लाख हो गया, but value wise it's decreasing. हर कोई quantity देखता है, value कोई नहीं देखता है. The things which you can buy today with 2 lakhs, you cannot afford to buy them after 10 years with that 4 lakhs which you will get from the FD, because that particular thing will cost you around 6 to 7 lakhs that time. And then nowadays there are some NBFCs which offer you 9 to 10% interest rate on your FD. But उसमें security कहाँ है? DICGC, which insures your money in the bank, doesn't insure your money in the NBFC. And no NBFC is under the protection of DICGC. That means अगर कल को ये NBFC bankrupt हो गया, then no one will help you to get back your money. If you are someone who invests in stocks, mutual funds, or any kind of investments which is related to securities market, then please don't invest in ideas or themes which you do not know about. Invest in ideas which you believe in, or the ideas which you know, or at least used their services once in your lifetime. This is the least thing to do to not lose your money. I saw a lot of people who don't even understand what the company is doing or what the business is about, but they keep on investing. And when it goes down, they keep on averaging it, buying more and more, in the hope that someday the price will go up. And that's how most of the people lose their money. And it's same in case of mutual funds too. People just look at the past data and they invest. That's not how it works. Like for example, you invested in a multi-cap hybrid momentum direct growth fund. कितने लोगों को पता है कि मल्टी कैप क्या होता है? कितने लोगों को पता है कि हाइब्रिड क्या होता है? कितने लोगों को पता है कि मोमेंटम क्या होता है, डायरेक्ट ग्रोथ क्या होता है, रेगुलर ग्रोथ क्या होता है? कितने लोग ये समझकर इन्वेस्ट करता है? हर वर्ड का एक इन्वेस्टमेंट थीसिस है. जैसे कि मल्टी कैप मतलब लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप मिलाकर यह फंड बनाया हुआ है. लेकिन किसको देखना है यह सब? पास्ट डेटा तो बहुत अच्छा है ना, रिटर्न अच्छा मिला लास्ट 3 ईयर्स में, तो अच्छा ही होगा. SIP करते रहो. प्लीज लर्न समथिंग. इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स वेरी सिंपल. एंड आई ऑलरेडी डिस्कस सम पॉइंट्स इन दिस वीडियो. प्लीज गो एंड हैव अ लुक. एटलीस्ट यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ इट वर्क्स. हर एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट का ना एक स्पेसिफिक रोल होता है.
because every investment instrument solves a particular problem and you need to know which investment instrument solves which problem. So let's talk about FDs first. Just few minutes ago I talked a lot of negative things about FDs, but does that mean FDs में invest नहीं करना चाहिए? No, it's not like this. You need to understand that FDs doesn't solve your inflation problem, growth problem or security problem. FDs are nowadays specifically designed to park your money or park your surplus money. FDs solve a specific problem, and that is if you have surplus cash in your hand and you don't have any place to invest it right now, then park your money in FDs for short term, that is 1 to 2 years. And इसीलिए बैंक्स आजकल 1 to 2 years का जो FD है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देता है. Now answer me honestly, how many of you thought about this? क्यों देता है बैंक? 18 to 36 months का जो FD होता है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट क्यों देता है? सो बेसिकली FDs सॉल्व योर मनी पार्किंग प्रॉब्लम. एंड सेविंग्स से अच्छा तो FDs में रेट मिल जाएगा ना. सेविंग्स में 2.8% और 3% मिलता है, FDs में 6% 7% आसानी से मिल जाएगा. वी कैन यूज FDs फॉर इमरजेंसी फंड्स ऑल्सो, बिकॉज इमरजेंसी फंड इज समथिंग दैट वी कीप handy so that in case of emergency we can use that. Mutual funds solve inflation beating problem, and that is also if you understand and then invest. Investing in direct stocks solves your growth problem. A job or a business solves your cash flow problem. So basically every investment instrument solves a particular sort of problem. So अगर ग्रोथ के लिए और इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए FD को यूज़ करोगे then तुम्हें कौन बचा पाएगा? And you cannot use mutual funds for parking your money, because फिर ऐसा टाइम आएगा कि तुम्हें वो पैसे का ज़रूरत है लेकिन वो म्यूचुअल फंड में डूबा हुआ है. और आजकल तो कुछ ऐसे केसेस भी सामने आ रहे हैं जहाँ पे लोग लोन लेकर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं. दिस इज हाईली रिस्की एंड हाईली डेंजरस फॉर यू. सो एवरी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट हैज सम स्पेसिफिक रोल्स टू प्ले इन योर लाइफ, and if you choose the wrong instrument for wrong purpose, then your finance will end up messed up. Up until now, I didn't make this kind of videos because I thought people already know these things. But actually when I look around, when I started to look around, I find a lot of people who don't know this, and even if they know, they ignore this because they don't truly understand the depth of these things. Inflation हर किसी को पता है, लेकिन कोई इन्फ्लेशन के बारे में डीपली सोचा है कभी? नहीं ना. अगर ऐसा ही चलता रहा तुम्हारा फाइनेंस क्या, तुम भी आउटडेटेड हो जाओगे. इंटरनेट पे क्या मीम चल रहा है और कौन सा रील्स ट्रेंडिंग पे है ये जानने में इंसान अपडेटेड नहीं रहता है. खुद क्या कर रहे हो, खुद के बारे में जानो, इसमें तुम अपडेटेड रहोगे. सो प्लीज upskill yourself every single day, and that is where your true wealth lies, and a little appreciation would help me a lot to continue making such videos. Thank you.